हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, इट्स अ रूम मेकओवर वीडियो। एंड यू कांट इमेजिन इस वीडियो के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। आफ्टर 7 डेज, नॉट 7 एक्चुअली 10 डेज़ के बाद ये वीडियो कंप्लीट हुई है। आई एम वेरी लेज़ी कि मैं इस वीडियो पे पिछले 10 दिन से लगातार कुछ ना कुछ कर रही थी, बट फाइनली ये कंप्लीट हो गई है। If you are interested then keep on watching. Now long story, I have shifted my room and जो मेरा पुराने वाला रूम था वो बिल्कुल पिंक था एंड ये वाला जो रूम था, इस रूम को लाइक मेकओवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बिकॉज ये मेरी वाइब्स के साथ मैच नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा रूम मेकओवर से पहले कैसा दिखता था। एज यू कैन सी कि जो वॉल्स हैं उनका जो पेंट है वो बिल्कुल ख़राब था, तो उसको पेंट की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। कुछ फर्नीचर थे वो भी पुराने हो चुके थे, लाइक अलमीरा एंड टेबल। हम यूज़ करने वाले हैं ये पीवीसी वॉलपेपर एंड सबसे पहले हम अपनी अलमीरा को क्लीन कर लेंगे बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर पीवीसी वॉलपेपर पेस्ट नहीं होता। उसके बाद हम पेस्ट करेंगे अपना वॉलपेपर अपनी अलमीरा पे एंड साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कट कर लेना है। आप प्लीज़ कार्ड की हेल्प से ही वॉलपेपर लगाना बिकॉज़ वो ईज़िली पेस्ट हो जाता है। ज़्यादा सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम अपने टेबल को करने वाले हैं पेंट करने से उसको एक न्यू लुक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पेंट करने के लिए मैंने लिया है ये एशियन पेंट्स का ऑयल पेंट एंड साथ में मैंने लिया है टर्पिन ऑयल एंड साथ में ये छोटू वाला ब्रश। नाउ पेंट को मिक्स करने के लिए आपको रेशियो लेना है 9:10। 9 रेशियो मीन्स 90% पेंट एंड 10% टर्पिन ऑयल एंड आपको मिक्स करना है। It's time for second coat.
ऊपर हम सेम पीवीसी वॉलपेपर लगाएंगे जो हमने अलमीरा पे यूज़ किया था। I'm a person who love teddies, dolls, minion, poo. I'm a huge lover of soft toys. तो उनको रखने के लिए मेरे रूम में कोई भी जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक पुराना सा रैक है, उसको पेंट करके हम एक न्यू लुक दे सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपने हेयर टाई कर लें पेंट करने से पहले। Now it's time for DIYs। फर्स्ट DIY हम बना रहे हैं एक वॉल हैंगिंग। उसके लिए हमें चाहिए वूल एंड कार्डबोर्ड पे हम 100 टाइम्स वूल को रैप कर देंगे बिकॉज हम बना रहे हैं टैसल्स। अब हमें लेना है मैक्रमे एंड आपको 100 स्टैंड्स चाहिए होंगे मैक्रमे के। नाउ आपको 18 इंच की स्ट्रैंड पे उन सारे 100 स्टैंड्स को टाई कर लेना है कुछ ऐसे। अब आपको इसके ऊपर अपने टैसल्स टाई करने हैं।